Okay, so question number 2.1. So see the question number 2.1. Calculate the number of electrons which will weigh together, weigh 1 gram. Question is, we have to calculate number of electrons and total weight of the electron is 1 gram. So if you know the weight of one electron, then you can get the number of electrons in 1 gram. See, yes, so beta, tell me what is the mass of one electron in gram? Yes, tell me what is the mass of an electron? Minus, it is 9.1 into 20 minus 20, it is 28 gram, because 9.1 into 10 raised to power minus 31 gram. Sorry, minus 31 is in kilogram. So in gram it is 9.1 into 10 raised to power minus 28. So this is the mass of one electron. That means if you have 9.1 into 10 raised to power minus 28 gram, so it is the mass of one electron. Mass of one electron is this one, right? Or we can write it like this: number of electrons in 9.1 into 10 raised to power minus 28 gram of mass is equal to 1. So we have to calculate number of electrons in 1 gram. So number of electrons in 1 gram of mass, or in 1 gram mass, or simply in 1 gram, is equal to 1 divided by 9.1 into 10 raised to power minus 28 into 1 gram. Am I right? See, number of electrons in 9.1 into 10 raised to power minus 28 gram is equal to 1. So number of electrons in 1 gram of mass, that is, this part become 1 upon 9.1 into 10 raised to minus 28 gram, or 1 gram multiplies gram cancel. So the value comes out to be, yes, 10 raised to 28 over 9.1 is 10 upon 9.1 into 10 raised to 27. 9.1, so it is round about 1. It is 1.098 into 10 raised to 27. इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे. Did you understand, beta? Okay. Next question. Calculate the mass and charge of 1 mole of electrons. Mass and charge of 1 mole. First of all, we should know mass and charge of 1 electron. So mass of an electron, just now we have done
Mass of an electron is, yes, yes. So it is 9.1 into 10 raised to power minus 28 gram. No, it is not mentioned in gram or kg. So you can take 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. But anyhow, let us take it in gram. तो अब आपको एक इलेक्ट्रॉन का मास नो now what is the number of electrons in 1 mole? So 1 mole of electron means how many electrons? Yes, 1 mole of electron is equal to 6.022 into 10 raised to power 23. 1 mole of electron is equal to 6.022 into 10 raised to power 23, right? So number of electron, sorry, we have to calculate mass of 1 mole of electron. So mass of, let a turn of your mic, mass of 1 mole of electron. First we write mass of 1 electron, right? So mass of 1 electron, that you know, 9.1 into 10 raised to power minus 28 gram. Now mass of 6.022 into 10 raised to power 23 electrons. So that is equal to 9.1 into 10 raised to power minus 28 into 6.022 into 10 raised to power 23. So value comes out to be, because this is 1 mole, so value comes out to be 5.48, because 9 6 are 54 into 10 raised to power 23 and 28, 5 minus 5 and 5.48 means minus 4 gram, because it is 54.8 into 10 raised per minus 5 gram. So in scientific notation it is 5.48 into 10 raised per minus 4 gram, or you can write 5.48 into 10 raised per minus 7 kg. So this is mass of 1 mole of electrons. So this is first part. Second is charge. So tell me, what is the charge, magnitude of charge? Charge on 1 electron is, yes, it is 1.602 into 10 raised to power minus 19 coulomb. This is charge on 1 electron. So what is the charge on 1 mole of electrons? Total charge on 1 mole of electrons. So charge on 1 mole of electrons, that is equal to 1.602 into 10 raised to power minus 19 coulomb into 6.022 into 10 raised to power 23. So this is the charge on 1 mole of electrons. The charge on 1 mole of electrons. Next,
question number 2. So question number 2 is, say, calculate the total number of electrons present in, calculate the total number of electrons present in 1 mole of methane. Total number of electrons present in 1 mole, of methane. So you see 1 mole of methane, how many molecules are there? So number of molecules in 1 mole of methane. What is methane? CH4, and its value is 6.022 into 10 raised to power 23. So these are the number of molecules in 1 mole of methane. Now, number of electrons in 1 molecule of methane. So see, carbon में बेटा number of electrons in carbon equal to, so there is 1 carbon, and what are number of electrons in 1 atom of carbon? एक कार्बन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? और इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर, that is 6, and 4 hydrogens and 1 electron for each hydrogen. So total number of electrons in 1 molecule of methane, that is equal to 10. So number of electrons in 1 mole of methane. So see, total number of molecules of methane in 1 mole, so that is 6.022 into 10 raised to 23, and number of electrons in 1 molecule, that is 10. एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक मोल मॉलिक्यूल्स में इक्वल टू 6.022 into 10 raised to power 24. ठीक है बेटा? Now second part, find total number and total mass of neutrons in 7 milligram of C14. Mass of a neutron is given to you. Mass of a neutron is given. So to calculate, first of all, we have to calculate how many carbon atoms are there in 7 milligram. So see, first you write mass of C14, that is 7 milligram, just convert into gram. So milligram means 10 raised to power minus 3 gram. 7 milligram, 7 into 10 raised to power minus 3 gram. So this is mass of C14, and its molar mass is 14. See, C14 means this is mass number. So specially one isomer is given, okay, C14. So its mass number is, or atomic mass is 14 gram per mole. So just calculate first number of moles of C14.
So number of moles of C14 equal to mass of C14 divided by its molar mass. 1 by 2 means 0.5 into 10 raised to power minus 3 means 5 into 10 raised to power minus 4. So number of moles of C14 is this. So just calculate number of atoms of C14. So moles are 5 into 10 raised to power minus 4, and in 1 mole Avogadro's number, just multiply them. So it comes out to be 5.0, means it is 6 for your 30, 3.011 into 10 raised to power 20. So these are the number of atoms in 7 milligram. क्या किया पहले हमने 7 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया, उस ग्राम से हमने मोल निकाल लिए और मोल को एटम्स में कन्वर्ट कर दिया बाय मल्टीप्लाइंग विद एवोगाड्रोस नंबर. ठीक है बेटा? ओके. अब नंबर ऑफ एटम्स आपके पास आ गए. अब आपको पहले निकालने हैं. अच्छा, पहला क्वेश्चन तो यही था कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स. तो दिस इज टोटल नंबर ऑफ एटम्स. आफ्टर गेटिंग दिस टोटल नंबर ऑफ एटम्स, दूसरा क्वेश्चन क्या है? टोटल मास. तो टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 मिलीग्राम ऑफ C14. तो टोटल मास जो है न्यूट्रॉन्स का 7 मिलीग्राम में है ना, 3.011 into 10 raised to 20. तो एटम्स है. ठीक है. और एक एटम का, सॉरी एक न्यूट्रॉन का, ये तो एटम्स आए ना, वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट न्यूट्रॉन्स, राइट? टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए पहले हमें. रुको, ये अभी तक आए C14 की एटम्स. तो बताओ एक C14 एटम में कितने न्यूट्रॉन्स हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन atom of C14. Yes, tell me, how many neutrons are there in one atom of C14? कितने न्यूट्रॉन्स है बेटा? बेटा 6C14 होता है. 6 इसलिए लिखते हैं क्योंकि अंडरस्टूड है, if symbol is written, its atomic number is fixed. So how many neutrons are there? Or number of neutron is A minus Z. 14 minus 6 means 8. मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एंड एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. दोनों का डिफरेंस कर दें तो आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो एक एटम जो है उसमें न्यूट्रॉन्स हैं 8. ठीक है. अब हम अगली बात करते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो आ गए, एक एटम है ना. अब हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालते हैं. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 3.011 into 10 raised to power 20 atoms in 3.011 into 10 raised to power 20 atoms of C14. Number of neutrons in
3.011 into 10⁻20 एटम्स ऑफ C14। एक एटम में है 8, तो 3.011 into 10⁻20 एटम्स में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाई 8, तो कितना हो जाएगा 2.408 into 10⁻21। तो ये जो है आ गया पहले पार्ट का आंसर, कि जो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, फिर है टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके पास आ गए दिस वन। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, 7 मिलीग्राम को पहले उसके मोल्स में कन्वर्ट किया, फिर उसमें C14 एटम्स में कन्वर्ट किया, और फिर हमने निकाले उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ये आ गए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। का बी पार्ट जो है वो है टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम ऑफ C14। तो अब 7 मिलीग्राम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने, टोटल मास निकालना है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं 2.408 into 10⁻21। कितने न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, और एक न्यूट्रॉन का जो मास है वो कितना दिया हुआ है, 1.675 into 10⁻⁻27 kg। तो जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, और जो वैल्यू आएगी दैट इज 4.033, ये 21 है ना, वो 27 माइनस 27, तो इट इज 4.033 into 10⁻⁻6 kg। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा बी पार्ट। यस बेटा, समझ गए? ओके, अब थर्ड पार्ट है इसका, ए फाइंड ए पार्ट टोटल नंबर, और बी अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, टोटल नंबर और टोटल मास। अब न्यूट्रॉन की जगह प्रोटॉन्स का इन 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया। तो 34 मिलीग्राम में पहले आप क्या करोगे, अमोनिया के मोल्स निकालोगे, फिर अमोनिया के मॉलिक्यूल्स निकालोगे, और एक अमोनिया में कितने प्रोटॉन है वो निकालोगे, और नंबर ऑफ अमोनिया in 34 milligram of ammonia into number of protons in one molecule of ammonium से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल प्रोटॉन आ जाएंगे, और फिर मास जो है प्रोटॉन का उससे मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएगा। तो लेट अस डू इट। 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया, थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट मास ऑफ अमोनिया, तो मास ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 34 milligram, so just convert into gram, 34 into 10⁻⁻³ ग्राम, ये आ गया मास ऑफ अमोनिया। अब मोलर मास ऑफ अमोनिया, तो मोलर मास जो है अमोनिया का वो कितना है, 14 नाइट्रोजन का, 3 हाइड्रोजन का, तो 17 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया that is equal to 34 into 10⁻³ gram divided by 17 ग्राम पर मोल। तो यहां से आ जाएगा
2 इंटू हाँ इतने मोल आ गए ना। अब हम निकालेंगे इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ molecules of ammonia, that is equal to 2 into 10 raised per minus 3 और एक मोल में होते हैं 6.022 into 10 raised to power 23। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो मॉलिक्यूल कितने आ जाएंगे, 6 to the 12 means 2 into 10 per minus 3 और 6.022 into 10 raised power 23। तो 34 मिलीग्राम में कितने आ गए ये जी। ओके 1.204 into 10 raised to power 21, राइट। तो ये आ गया अपने पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हमें क्या निकालना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। तो एक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हैं एक मॉलिक्यूल अमोनिया में। तो एक प्रोटॉन में कितने हैं, एक नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं 7 इक्वल टू एटॉमिक नंबर, और 3 हाइड्रोजन में एक एक, तो टोटल अगेन 10। तो जस्ट मल्टीप्लाई इट बाई 10। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए, बोलो 1.204 into 10 raised per 21 into 10 is total number of protons आ गए 1.204 into 10 raised per 22। तो ये हो गया पहला पार्ट उसका कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं इन 34 मिलीग्राम अमोनिया होते हैं 1.204 into 10 raised per 22। अब मास, तो मास ऑफ वन प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का जो मास है वो होता है बेटा 1.67 into 10 raised to power minus 27 kg। 1.672 के करीब होता है तो 1.672 ही ले लो, अगर 1.67 भी लोगे तो इट्स ओके। न्यूट्रॉन का 1.675 होता है और प्रोटॉन का 1.672 into 10 raised to power minus 27 kg। तो जस्ट कैलकुलेट टोटल मास ऑफ 1.204 into 10 raised to power 22 प्रोटॉन्स। एक प्रोटॉन का मास आपको पता है 1.672 into 10 raised to power minus 27, और टोटल प्रोटॉन्स हैं इन 34 मिलीग्राम, that is 1.204 into 10 raised to power 22। जस्ट मल्टीप्लाई करो इनको, कितना आ गया 1.672 into 1.204, तो 2.013 into 2.013 into 10 raised to power minus 27 है, उधर 22 है, कितना हो जाएगा -5 kg। तो इतना मास आएगा टोटल मास। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है
will the answer change if the temperature and pressure are changed? तो बताओ बेटा, टेम्परेचर और प्रेशर को अगर चेंज करें तो आंसर में चेंज आएगा क्या? Any change if we change? It will not change because number and mass will not be affected by temperature. Number and mass is independent of temperature and pressure. Number of protons, mass of protons. That's why answer will not change. Okay, so this is second question. Now next question. How many neutrons and protons are there in the following nuclei? See, just I will write first Z X A. Z जो है that is atomic number. और बेटा atomic number means number of protons or number of electrons in the neutral atom. But यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात हो रही है, तो let us write it as number of protons only. A, it is mass number. तो mass number जो है that is number of protons plus number of neutrons. Atomic number is only number of protons and mass number is sum of protons and neutrons. So number of neutrons equal to the mass number minus atomic number of neutrons. Okay, तो हमारा जो क्वेश्चन है तो पहले चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू Z. एंड दूसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू A minus Z. So start with first one. C6. See, carbon 6 or carbon is 6C13, right? ZXA. तो बेटा इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? Yes, number of protons equal to 6 and number of neutrons, yes, number of neutrons equal to A minus Z means 13 minus 6, 7. Second is 8 O 16. So again tell me number of protons 8, number of neutrons, yes, because it's 16 minus 8. Next is 12 Mg24. Yes, number of protons equal to 12 and number of neutrons is equal to 24 minus 12, again 12. Next, Fe 26, 56. So number of protons equal to 26 and number of neutrons A minus the 56 minus 26 means 30. Okay. And last one is 38 strontium 88. Strontium 38 88.
So number of protons is equal to 38 and number of neutrons, that is 88 minus 38 means 50. So that's it. This is question number 3. Now question number 4. Write the complete symbol for the atom with given atomic number and mass number. So first one is Z17. So Z17 is of chlorine. It is chlorine 35. Sorry, chlorine 1735. That is the heat symbol. Next, 92. 92 is of uranium. Is uranium 92 233. Third is 4. That 4 means beryllium. So 4 Be9. Okay. So these are first 4 questions. Next is yellow light emitted from a sodium lamp has a wavelength of 580 nanometer. So see, wavelength is given to you. क्या दिया हुआ बेटा? Wavelength. Yellow light emitted from a sodium lamp, its wavelength is given to us, that is 580 nanometer. Lambda is 580 nanometer, that is equal to 580 into 10 raised to power minus 9 meter. So we have to calculate frequency and wave number. So what is the relation between frequency and wavelength? Tell me. And yes, lambda into nu equal to c. So we can calculate nu, that is frequency, by using lambda and c. C is speed of light. Value of c is c into 10 raised to power 8 meter per second. So convert lambda into meter, that is already there. So frequency we can calculate. Frequency is equal to C over lambda. C is 3 into 10 raised to power 8 meter per second, and wavelength is 580 into 10 raised to power minus 9 meter. From here, meter cancel, we get the value per second. Answer comes out to be 5.17 into 10 raised to power 14 per second, or we can write it as 5.17 into 10 raised to power 14 hertz. Okay, frequency is 5.17 into 10 raised to power 14 per second. This is step 1. Now step 2. Step 2 is wave number. Wave number nu bar, that is 1 upon lambda, that is 1 upon 580 into 10 raised to power minus 9 meter.
that is equal to, just take it as 10 raised, above it is 1000 into 10 raised per 6 divided by 580, 1000 over 580, that is 1.724 into 10 raised to per 6 per meter. Got it? Okay, great. So next question is 2.6. Find energy of each of the photons which correspond to light of frequency 3 into 10 raised per 15 hertz and have wavelength of 0.50 angstrom. So see, first of all, just write the formula. So here we have to use Planck's quantum theory. Energy of each photon. You know, energy of each photon is equal to h nu, or it is equal to hc over lambda. So see, everything is with us. In first case, frequency is given. In the second case, wavelength is given. H value we know is 6.626 into 10 raised to power minus 34 joule second, and value of C is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. So let us solve first part. Frequency. Frequency is 3 into 10 raised to power 15 hertz. From here, energy is equal to h nu. H is 6.626 into 10 raised to power minus 34 joule second, and frequency is 3 into 10 raised to power 15 hertz, means per second. So just multiply, we get 1.986 into 10 raised to power, it comes out to be minus 34. It is minus 18, means minus 18 joule. So this is the total energy of the photon of frequency 3 into 10 raised to 15. Second part is wavelength is given. Wavelength is 0.50 angstrom. So just convert first into meter. It is 0.5 into 10 raised to power minus 10 meter. And energy is equal to hc over, yes, sorry, 6.626 into 3. Okay, it is 19878. Sorry, it is 1.9878, right? Sorry, 1.9878. Yes, right. 1.9878 into 10 raised per minus 18 joule. Now next part, H is 6.626 into 10 raised per minus 34 joule second, 3 into 10 raised per 8 meter per second, and lambda is 0.5 into 10 raised per minus 10 meter. So again multiply 6.626 into 3 and divided by
0.5. Which one? Yes. Uh, the minus 34 plus 15, it comes out to be minus 19. So we have, instead of 19, we write 1.9, 19.878. So we write 1.9878. So it becomes 10 raised per minus 18 instead of minus 19. Okay. Now in this case, it is 3.9756. 3.9756 into minus 34 plus 8 and again plus 10 to minus 16. So it comes out to be minus 15 joule. 1.39756 into 10 raised to power minus 15. There is no need to write up to 4 digits. You can approximate the result like this: 3.98 into 10 raised to power minus 15 joule. Okay. Next, calculate the wavelength, frequency, and wave number of a light wave whose period is given to us. And what is period? 2.0 into 10 raised to power minus 10 second. Period is given. What is period? Time taken by the wave to complete one cycle. That is called period. What is period? Time period is time taken by the wave to complete one cycle. Okay. So frequency and time period are related as, because there are three parts. First is frequency. To calculate frequency, frequency is 1 upon time period. Because see, period is second per cycle and frequency is cycle per second. It is the second, period is my second per cycle. Frequency is cycle per second. So frequency and time period is inversely proportional. 1 upon 2 into 10 raised per minus 10 second. So it comes out to be 5.0 into 10 raised to power 9 second. Next, frequency. After frequency, there is wavelength. So wavelength lambda, that is equal to, just use the rule, lambda into nu equal to c. So lambda equal to c over nu. Frequency, the speed of light is 3 into 10 raised per 8 meter per second, and frequency, just now we have calculated 5.0 into 10 raised per 9 per second. So it is 6.0 into 10 raised to power minus 2 meter, right? So 5 6 jar 30. So
10⁻7 कर दें इसको और 30 कर दें तो 6 आ जाएगा, और 10⁻7 माइनस 10⁻−9, तो इट बिकम्स 10⁻−2। तो वेवलेंथ आ गया। और थर्ड है वेव नंबर। तो वेव नंबर that is nu bar, that is equal to 1 upon lambda. It is 1 upon 6.0 into 10⁻⁻2 meter. So it is equal to 100 over 6, that is 16.666 means 16 point, let us take 16.67 per meter. So this is the answer of question number 7. Okay, now come to the next question. Yes. बेटा आपकी आवाज ना क्लियर नहीं सुनाई देती है मुझे, क्या बोल रहे हो? ये सेकंड वाला बोल रहे हो आप? देखो बेटा, अलग से लिखता हूँ इसको। ये था 3 इंटू 10⁸ और नीचे था 5 इंटू 10⁹ ठीक है। मैंने क्या किया, इसको कर दिया 30 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻7, और इसको 5 इंटू 10⁻9 ही रहने दिया। तो 5 6 5 जा कितना 30, तो 6 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी 7 और 9, 7 माइनस 9, तो 6 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमने क्वेश्चन कर लिया अभी तक 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 was last question of the day. What is the number of photons of light with wavelength 4000 picometer that provide 1 joule of energy? तो सबसे पहला काम क्या होगा, ये है टोटल एनर्जी। देखो टोटल एनर्जी जो है, जितने भी फोटोन्स हैं उन सबकी टोटल एनर्जी है 1 जूल। और अब हम अगर एनर्जी ऑफ 1 फोटोन फाइंड आउट कर लें, व्हाट इज एनर्जी ऑफ 1 फोटोन? एनर्जी ऑफ 1 फोटोन that is equal to h nu, that is equal to hc over lambda. तो h, c और lambda, what is h? and c into meter per second, and what is lambda? 4000 picometer. So picometer is minus 12 meter. कीप इन माइंड कि सारे जो वैल्यूज हैं वो एक ही यूनिट में होने चाहिए। तो ऐसा यूनिट है तो सारे एसआई में होने चाहिए, ये ध्यान में रखना है। 6.626 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, 3 into 10⁸8 meter per second divided by 4000 into 10⁻⁻12 meter. मीटर मीटर कैंसल, सेकंड पर सेकंड कैंसल, तो जो वैल्यू आएगी
6.66 into 3 divided by 4 किया मैंने इसको ना, ये रहने दिए 4.9695 into 10 raised to power. अब 10 raised to power आपके पास क्या है, -34 थे, उसमें आपने 8 ऐड किए, उसमें आपने 15 ऐड किए, तो 10 raised to power माइनस हो गया, तो -12 था ना, तो -34 थे, इधर से 8 है, ये -12, तो 3 हट गए तो कितने रह गए, -12 में से 3 -9 -12 में से 3 गए। अच्छा टोटल कितना रह गया, ये बोल रहे हो है ना, -34 है प्लस 8 है ना, और -17 हो जाएगा ना, तो 4.9695 into 10 raised to power -17, तो एक फोटोन की एनर्जी ये है, टोटल एनर्जी ये है, तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स कितने होंगे 1 जूल में, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ फोटोन्स इन 1 जूल ऑफ एनर्जी, तो टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एनर्जी 1 जूल और एनर्जी ऑफ 1 फोटोन 4.9695 into 10 raised power -17, तो अब 10 पर 17 आप ऊपर ले जाओ, 2 से जूल कैंसिल, 4.9695, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 डिवाइडेड बाई 4.9695 into 10 raised to power 16, तो 10 डिवाइडेड बाई 4.9695, that is 2.012 into 10 raised to power 16, तो इतने फोटोन्स आएंगे बेटा, जिनकी एनर्जी जो है टोटल एनर्जी वो 1 जूल के बराबर होगी। तो आज हमने 8 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, ओके, वेलकम। Okay, so that's all for the day. Thank you so much to all of you. आप लोग साथ में रहे के लिए आपका धन्यवाद, और आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहो, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करेंगे और एक्सरसाइज, एग्जाम्पल, कंसेप्ट, ठीक है, ये सब चीजें हम करेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, और साथ में नीट और जेई के क्वेश्चंस भी एट द एंड हम करेंगे चैप्टर वाइज, एंड इट इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, so be with me, share with your friends, share with all your classmates, so that they will get the benefit of free education. I hope कि next time आप अपने दोस्तों के साथ आओगे और सारे कंसेप्ट को अच्छे से सीखोगे, और मेरे सिर्फ इतना सा ही पॉइंट है कि आई वांट टू ग्रो माय कम्युनिटी,
है। तो उसी के लिए सब कुछ कर रहा हूँ ताकि सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, और उसके लिए आप लोगों की हेल्प जो है मुझे चाहिए। आई होप कि आप हेल्प करोगे, अभी तक जितना सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आगे भी सपोर्ट करते रहो। ये मैं ओके, साउंड नहीं आ रही है? मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जो है ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, और आप सबसे ये शेयर करो कि देयर इज अ फ्री एजुकेशन ड्राइव ऑन दिस चैनल, और आप लोग सारे हेल्प करो टू ग्रो दिस चैनल, और हम एक कम्युनिटी बनाते हैं जिसमें सारे पढ़ने वाले बच्चे हों, और एक ऐसी कम्युनिटी जिसमें फ्री में एजुकेशन हो। मेरा भी यही एम है कि हर एक बच्चे को 11th-12th तक फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, और उसके लिए आई एम ट्राइंग हार्ड। मैं हर रोज में 2 घंटे आपके लिए देता हूँ, और उसमें 11th-12th का कंसेप्ट से लेके नीट जेई तक सब कुछ मैं करवाऊंगा। इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।